Good morning. Today, tip number 4, Indian Penal Code. So, as I already told you, code means codifying, which was already in existence. So, several offences which were punishable is being followed by kings and other leaders and dictators, whoever they may be. But after British brought India under the domain of British Empire, they have, by appointing election law commission, the one of the code was Indian Penal Code 1860. See, the major thing is about how to understand Indian this the Penal Code prescribes the offences which is breach of public law. Therefore, state will be the party. Main thing for crime is actus reus, mens rea. Actus reus means physical act. Mens rea means mental thought. Mens rea means guilty mind. Mens rea, guilty mind. Motive means why that act, by that mental rea. There were general exceptions. So many things are there. Act of God, accident, act done by judicially, mistake of fact, accident. So many things are there. Most important thing in the Indian Penal Code to understand was, under Indian Penal Code, the definition of offence is anything. In other provisions, it would have been stated that any act or omission to do. So the person will be liable for act done by him, which was is not legally bound to do, and he will be liable for punishment if he is omitted to do certain thing which he is liable to legally bound to do. That omission as well as commission, both are correct. Why anything means, act means personal indulgence. Anything means meeting of minds, conspiracy, abatement, direct abatement, instigations, indirect abatement by telephone, conversation, the behavior, all these things. Therefore, the word anything was beautifully worded by Lord Macaulay. So for this area, I think it is sufficient to understand. Another thing was, you must understand that Indian Penal Code categorizes the offences by chapter wise, and there will be definition clause and punishment clause. And the title of the offence, crime, may be there, and slowly that title will have a degree of variation, like aggravated form or minimized form, like causing hurt or causing grievous hurt by sudden provocation will be lesser punishment. Aggravated form means by if you use acid, that will be an aggravated form. 307 is attempt to commit murder, which is aggravated form. 308 is attempt to commit murder on sudden provocation, exceeding self-defense. These things are there to understand Indian Penal Code. And slowly the chapter which contains the title of the crime will slowly, like just you take example, theft. 378 is definition for theft. Simple theft 379. Theft in dwelling house 380. 81 theft by servant. Thereafter then comes extortion. Then coming robbery. Then coming dacoity.
And when while doing robbery or dacoity, murder is committed, then a different offense. Like that, everywhere, every chapter contains a variation of offenses based upon title of the crime. So this is most important to understand. I hope today, so far English conversation is concerned, I cut short it and I will go in Hindi. If anybody do not want to listen Hindi, kindly cut short this interaction. Best wishes. आप लोगों को इंडियन पीनल कोड, आजकल क्या भारतीय न्याय संहिता, इसके बारे में टिप देना चाहता हूँ. ये कोड का मतलब क्या होता है, कोड क्या है, एक्ट क्या है. कोड का मतलब जो कानून पहले से है तो उसको रेगुलराइज करके कोड बनाते हैं. जैसे खून करना जो है उसको दंड देना राजा का करते, चक्रवर्ती का करते हैं, लोकल लीडर का की कर्तव्य था ना. ये धीरे चोरी करना तो उसको दंड देना, ये सब फिर धीरे धीरे उसको कोडिफाई करना है. तो अंग्रेजी सरकार, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को अपना लिया तो लॉ कमीशन बिठाया गया. लॉ कमीशन इंडियन पीनल कोड 1860 जो भी दंड है तो वो सबको कोडिफाई कर माला बना दिया है. तो इसलिए तो आपको ये पीनल, इंडियन पीनल कोड कैसा जुर्म को डिक्लेयर करता है, ब्रीच ऑफ पब्लिक ड्यूटी. तो ये पूरा समूह में आपका जो कर्तव्य है उसको आप ब्रीच करेंगे तो आपको इंडियन पीनल कोड मुताबिक आपको दंड मिलेगा. तो इसीलिए सरकार उसमें कंप्लेनेंट होती है. इसमें एक्ट एस रियस मेंस रिया, एक्ट एस रियस मेंस रिया. एक्ट एस रियस मतलब फिजिकल एक्ट, मेंस रिया मतलब मेंटल एक्ट. ये एक्ट एस रिया, मेंस रिया, तो आपको इस सब्जेक्ट में जानकारी रखना. मेंस रिया गिल्टी माइंड, मोटिव मीन्स वाई, क्यों ऐसा करते हैं. फिर उसके बाद जनरल एक्सेप्शन आता है. जनरल एक्सेप्शन आता है तो आपको जनरल एक्सेप्शन को समझना पड़ेगा. एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, और मिस मेजर, और जुडिशियल एक्ट, सेल्फ डिफेंस, ट्रायल, सो मेनी थिंग्स जनरल एक्सेप्शन में लिखा गया है. से अच्छा आपको एक चीज़ समझना, इंडियन पीनल कोड में डेफिनेशन, अफेंस का डेफिनेशन में एनीथिंग ऐसा वर्ड जुड़ा हुआ है. बाकी एक्ट में एनी एक्ट और ओमिशन विल बी पनिशेबल. हियर इंडियन पीनल कोड में एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब है एक्ट का, एक्ट पर्सनल एक्ट का होगा नहीं. यही तो मीटिंग ऑफ माइंड, अबेटमेंट, कंस्पिरेसी, अबेटमेंट डायरेक्ट बाय पर्सन, इन पर्सन, अबेटमेंट बाय टेलीफोन, कोई कत्ल, नहीं तो कोई ऐसा चीज़ जो करेगा तो इनडायरेक्टली अबेट हो जाता है. ये सब एनीथिंग की मतलब. ये ऐसा आपको आखिरी में आपको बहुत बड़ा चीज़ बताना चाह रहा हूँ. इंडियन पीनल कोड में चैप्टर वाइज ऑफेंसेस को डिक्लेयर किया है. डेफिनेशन क्लास, एक एक चैप्टर में अंग अंग करके, पार्ट पार्ट में ऑफेंसेस को, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट मिंटन कॉइन्स, ऑफेंसेस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन बॉडी. ऐसे चैप्टर में डेफिनेशन क्लासेस होगा. वो टाइटल, वो एक ऑफेंस को एक नाम दिया जाएगा, उसका डेफिनेशन होगा. फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे उसको एग्रीवेटेड फॉर्म में उसको डिग्री जो है इंक्रीज करेंगे, डिग्री कम करेंगे तो उसको पनिशमेंट उसमें अलग अलग रहेगा. डेफिनेशन क्लास, पनिशमेंट क्लास. जैसा चोरी 378 चोरी, 379 चोरी का दंड है, 380 चोरी घर में है,
381 सॉरी नौकर ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते जाए। तो जैसा 324 326 सिंपल हर्ट ग्रीवियस हर्ट, उसमें सडन प्रोवोकेशन में अगर आप ऐसा काम किया हो उसका दंड कम हो जाता है। तो ऐसा बहुत कुछ है, तो आप चैप्टर वाइज की पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। डेफिनेशन क्या होता है समझ लो। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ऐसी सेगमेंट जैसा जाता है। नमस्कार।